So the first question is, why consulting on e-invoice? Okay, friends, as we know, for any organization, sales is an important aspect of their uh, profitability or revenue cycle. And the moment you say, okay, your invoicing is related, your aspects, certain businesses related to your sales, that means the director or the company owner is there of all years to you. They understand, they will listen to you very aptly, and they will talk to you on that, how they can work more on the sales part. Okay, so all organizations strive on sales, and e-invoice is nothing but a concept which has been embedded in the sales process of an organization. The repercussion of not following the ground rules is tremendous. Okay, now each and every customer, each and every vendor is being asking a question whether whether e-invoice is applicable to you or not. Okay, one of the reason is that the moment you do not generate a correctly generated e-invoice or invoice which you are supposed to generate, that means your invoice is not valid. And if your invoice is not valid, the customer of yours will not be able to take the input tax credit. So the government is very clear that all B2B invoices would now have to be, for those where the e-invoice is applicable, would now have to have these conditions. And what are those conditions? That we will come on that very shortly. As you can see, applicability of e-invoice has become a critical aspect for any business organization. Okay, so friends, this is something that is affecting or impacting the organization directly to its core, and would like you to understand further as to how this business can help you, how this e-invoice can help you as well as your clients. Okay, so when we talk of a consulting practice, so I'm not discussing about the general this thing, but when we talk of a consulting practice, in my view, there are few prerequisites. One is that there has to be an immediate client need, okay, and requirement. And as we can see in e-invoice, for those assessees where it is applicable at the 20 crore plus, this is an immediate requirement. Value addition possibilities. As we move along during the session, we will definitely see what are the value additions which are possible amongst the scenario in which Tally is operating. Creamy layer of client. And for me, if I have to start consulting on something, or if I have to do some consulting, I will see whether the clients, the probable clients of me, can afford me or not. So as you can see, there is a turnover limit. So those who are doing certain amount of business, beyond that, those only are impacted for e-invoice. So this makes a very good case for starting your consulting practice. And the most important of all, digitization push in overall business requirements. Friends, I have seen the case studies, and I will share some of you during the later part of our webinar, that what digitization has, how the digitization of the entire business process has helped the businesses. And with e-invoice, the clients are forced to move to digitalization. Earlier they used to do it manual invoice or something, you know, ठीक है 2 दिन बाद में भेज देंगे, 7 दिन बाद में भेज देंगे, double check करके 3 बार check करके भेज देंगे, and all those things. But now with digitization push in the entire economic scenario, this has become a very good prerequisite, and because of that, you will definitely enjoy being a consultant on e-invoice. So in my view, when you become a consultant on e-invoice, you can also be an ATS consultant. Any guess what is this ATS acronym stands for? This is coined by me only, like our beloved Prime Minister
Narendra Modi keeps finding some kind of uh, acronyms. I also thought, let me emulate him. So ATS, any guesses? What it could be in the chat? Please reply. Be an ATS consultant. What do I mean by that? Any guesses? I'm sure some of you would definitely guess it right, but still, let us make it an interactive session. Atmanirbhar. Okay, that's interesting. Anytime service. Venkat says yes, Mr. Venkat. Yes, e-invoice is available. The portal of e-invoice is 24/7, but this isn't there. Anytime service. Digital India, yes, but what would an acronym? Atul bhai, slightly near, but not exact what I am thinking. But yes, slightly near to what my thought process is there. Thank you. Ease of being business enabled, yes. Okay, I will take it to that. So the opportunity is to become an accounting consultant. By accounting consultant means you can draw chart of accounts, you can see how things are going to be in the near future for your clients. So not only draw chart of accounts, but you can give them the entire from start to end a booklet as to what your accounting could be. Once you start practicing on e-invoice, so there is an opportunity to become an accounting consultant. Along with the accounting consultant, you also can become a technology consultant. Okay, now technology consultant, by meaning when we see that this entire push of e-invoice is nothing but a pure play of technology. So this e-invoice can embrace you further in terms of getting how the technology works, what are the ground rules for this particular technology, and the further technological changes that a client can bring in. Okay, a client of mine who embraced e-invoice then asked me further to digitize his office in terms of paperless office, and then sending the automated mail from Tally to the clients. And that is how, by implementing e-invoice, I was able to take further working on the technology part of it. And the last one is the statutory consultant. Okay, so Atul bhai, you are very right, a tax consultant. So you can also become a statutory consultant and combine together an ATS. ATS to all of us normally means anti-terrorist squad, but it is not that. It is accounting, technology, and statutory consultant. And I wish that many of us in today's session, whoever are attending, would after the session will say, okay, yes, we are now ready to become ATS. How many of us would like to become? Yes or no? Yes, Sashi, thank you. Vijay bhai, yeah. Ishwar bhai, thank you. Ishwari, sorry. Jantilal ji, yeah. Hitesh bhai, yes. That's fantastic. I am really happy with that kind of response, and I hope we take this kind of response further and further. We 115 people will ensure that we are making the best of the session today. Okay, just a small video for us to understand how to become a top consultant. Sanjay, just say. Yes. Best consultants in the world are very good at casting and asking good questions. That's why when they say to a client, I have the solution for you, the client understands that that solution is perfectly tailored. You see, the suit is perfectly tailored to my body precisions. You understand? There's a difference in wearing a suit that's not perfectly tailored versus one that's perfectly tailored. So when your response is perfectly tailored, the client feels it was made for them and they buy it. It's very hard for me not to buy a suit like this when it's perfectly tailored. But if the suit was not perfectly tailored, I may think about it. I will have doubts. So if your response is not perfectly tailored, your clients may not be committed to buying that response or that proposal or that solution that you're offering. So tailor the solution to the client, but you can only tailor it if you know the specifications. You know absolutely everything about them. But you can't know everything about them if you're asking general questions, because you ask general questions, they give you general responses. So the key is to ask good questions. If you want to become an ATS consultant, the key is keep asking good questions. Of course, you should know what the solution you are going to offer, but before offering any kind of solution, it is the questions of yours
will be very important. Sir, there are two hand raised, so can we just check with them? Atul sir, Yes. if you want to ask anything, can you unmute and ask? Atul Mittal. Okay. Mr. Bharat Vora, you have raised your hand. You want to ask any question? Sometimes it is by mistake. I think if it. Okay. Probably. Right. No issues. Yes, sir. Please go ahead. Okay. So when I say e-invoice is an opportunity, let us see how it can be a hook to reach out to your new and potential clients. Okay. So what are the views that I'm having it? Let me share those views. Currently, Tally is being used in multiple types of industry, be it a service organization, okay, be it a trading organization, be it a manufacturing organization, be it a petrol pump, be it a hospital, be it a school, be it any time, any kind of industry, and you will see Tally running there. Okay. So currently is being used, and because of this e-invoice, this can be a hook for you to get those clients. Okay. So we can use Tally as a e-invoice as a hook, because that, as I've already mentioned, how important e-invoicing is to the businesses. So Tally can help you in terms of implementing multiple types of business. There are variety of features. When I say the features which are the clients are using, then mostly are using it for GST, TDS. Okay. Apart from the stocks working, cost center, foreign currency transaction, order processing, job order, banking, and the latest edit log. Okay, edit log, it is expected in next few days. And more on this, I would request Sanjay to share maybe now or maybe later what is edit log. And but it is more on the MCA requirement. Okay, so for that also we will have a separate session, and I think very shortly a date would be announced on that as well. So these are the features of Tally. Okay. And there are many other features. Of course, I have not covered all of them, but these are star features. And once you know how to use these features, then you can use the e-invoice hook to ensure that you get implementation, you get customization, or you get any other working for those kinds of features also. Okay. So this is what my take is. Okay. Now, the main aim of today's session is embrace TallyPrime for e-invoicing. We all know 20 crores plus companies turnover and all those stuff, it is important. But why do we need Tally for that? What is the main agenda for us today to share with you or to showcase? Okay, so the new or one more acronym from my side is this ESP. Any guesses on the ESP part? Why should we embrace TallyPrime for e-invoicing? ESP. Let me share my screen. Easy to use. We will see how easy it is to activate it. Okay, easy to use, simple to implement, plenty of support available. There are umpteen number of Tally partners available in Tally scenario. The call center is available, the help files are available, and there are many more options which are available. So when we look at TallyPrime for e-invoicing, in my view, ESP is something that you must look at as to whether yours any other option, whether it is easy to use, simple to implement, and is there a plenty of support available. And I will cover each one of them in my ongoing slides. Okay. So let's start with e-invoice basics.
applicable for turnover more than 20 crores from 1st April 2022. Okay. Now, when I mean by 20 crores, I mean whether it is for one financial year or whether it is for all the financial years together, or whether how do we calculate this 20 crores turnover? Any suggestions? Gopalaya, yes, service industry e-invoice is applicable. I will come on that. How to get activated? Turn 20 crores. How do we see 20 crores for 1 year or 20 crore? So she says current aggregate turnover. Pradeep says aggregate turnover. Keval says from 2017-18. Keval bhai, whether it is GST regime each year. Yes, Chinnaman. On dot. A loud shout out to you, Mr. Chinnaman. Chinnanan. Thank you. It is 20 crore in any of the year after the GST has got applicable. So consider a scenario where in 18-19 I had a 20 crore turnover, and in 19-20 I had a turnover for unforeseen reason, or in 2021 because of Corona I had a turnover of 2 crores. Okay, whether e-invoices were applicable to me, yes or no? Yes, e-invoice would be applicable in any of the financial year after GST has got applicable, that is 1/7/2017. If my turnover has gone beyond 20 crores, then a black screen is visible, is it? Sanjay, is the screen visible? Yes, it is perfectly. Okay, somebody just mentioned it on the chat. No. Actually, for them, it might be there was. Okay. It was not at all a problem at any point in time. Okay. Okay. Right. So applicable to turnover more than 20 crores. Okay. We will see how the reporting of ERP portal is there. Okay. I think this is a. Okay. Okay. These are the basic things. IRN 64-digit number, which is uniquely generated from the hash of your what we say, date of invoice, your GSTN number, and the amount, and by all these 4-5 things. It is a 64-digit uniquely generated number. It can never be duplicated with any other number. Okay. QR code validated invoices should have this thing. And the most important part why e-invoicing we should get it right is that there is no amendment whatsoever. Okay, you can cancel it within a specified time period, but definitely there is no amendment whatsoever. Okay. When I said IRP in my previous slide, what is IRP? It is Invoice Registration Portal. Okay, is the website for uploading and reporting by invoices. Consider IRP as a person or as a company which is just taking the information if it is coming in a valid format. Okay, it is not actually checking whether the rate of tax is correct or not, or whether it is there or not. It has got some validation, and I will come on that. What kind of validation does the IRP portal has it? But definitely it is not concerned with the correctness or wrongness of the transaction. Okay, IRP is a portal which, once it is receiving the information in a valid format, immediately within a fraction of nanosecond, it is going to give you the IRN. Okay. I will come on the IRN part also. So IRP is the portal where you will have to upload the invoices, and we will see from Tally how we can do it. Okay, what are the compulsory fields? Okay, so these are the compulsory fields which are required to be uploaded. Seller details, that is name, address, GSTN, buyer's details, consignee details, dispatch details, item details, invoice, export. If you see,
Then I have with me my colleague also. Hiral, total how many this thing are there? Number of fields? I think 133. Yeah, absolutely. 133 fields are there, out of which 45 fields are mandatory and 88 fields are optional. Yes. So 45 fields are mandatory fields and 88 fields are something which are optional. Okay. So currently we need to upload about 133 fields on the IRP portal. And believe me, while you're using TallyPrime, you won't even realize that whether those how do you get those fields, because it is doing it on automated mode. Okay, so we will see all those things, how we can work on that. Okay, our B2C supplies also need to be reported? No. Okay, B2C supplies are not required to be reported, only B2B. Then what the other things are? Okay, what are the other invoices which needs to be reported? I will come on that. What are the other invoices which needs to be reported? Okay, now this is a question for the participant. Is there any fixed position of the QR code on the invoice? We saw that there is a QR code which is required. I will come on. See, this is a QR code which is there on the right hand side of the invoice. So is there a fixed position for QR code? Participants, please answer. Sunil says no. I will come on that, Mr. Amit Kumar, whether it is applicable to exempted goods or not. No. Arey, wow. All my participants are so knowledgeable. No, there is no fixed position of QR code. You can get your QR code pasted anywhere. Okay. Tally by default allows it on the right hand side of the invoice, so it can be printed anywhere. Okay. Now another question: is IRN number compulsory to be printed on invoice? Participants. Is IRN number? Here we are missing. Most of us are saying yes. The answers again is no. IRN number is not compulsory. QR code is compulsory. IRN number is not compulsory. IRN number is embedded in the QR code is fine, but it is optional. Okay. So please understand that your IRN number is not compulsory. The 64 digit you need to generate, but it is not compulsory to be printed on the invoice. So we most of us are getting 50-50 right. Okay, let's go further. Maximum number of 1000 lines are allowed, and this is because the GST portal is allowing only 1000 lines in one invoice. Okay, I don't know whether any businesses is having more than 1000 lines, but maximum number of lines is 1000. Okay. What does preparedness for e-invoicing is? So I will just request my colleague Hiral to share a few thoughts as to how that e-invoicing preparedness to be, how the users can be prepared for e-invoice. Okay. Yeah, Hiral, please. Yeah. So one thing is that initially when the e-invoicing will be applicable, as rightly said by Punit sir, that the turnover is exceeding a certain limit. Like they have considered the turnover more than 20 CR. For the to look at that, we can see the combined turnover of the in any financial years, any 3 or 4 financial years, if it is exceeding more than 20 CR, then it will be applicable from 1st April. So and the government will be notifying you through the communication, official communication, that it is applicable, or else we can also voluntarily examine and we can register on the portal, on the GST portal. Okay, and the registration process is very simple. We need to just put our GST number, and we can identify. It will state that
the GST, whether the e-invoicing is applicable on your GST number or not. And further, we can register Tally as the GSP, and also register, also make our, we can create our username based on, in case the API based e-invoicing is generated. Okay. And similarly, when we are entering the transactions in Tally, we can definitely we can put the username and credentials which we have registered at the time of API registration, while selecting the Tally as a GSP. So the same username and the passwords we can put in the Tally. Fantastic. What Hiral bhai explained was very correct, that how we can upload the or update the information on the IRP portal. Okay, so that is the process of registering on the IRP portal, and the preferred API, as we can see, it has to be, since that information has to flow from Tally package, that is TallyPrime package, we need to select Tally India Private Limited as the preferred GSP. We have got users and sub-users kind of working in on the IRP portal, so you can complete the registration out there also, and that's it. That is what it is. Okay, so I have a question out here for my participants, that suppose e-invoice is not applicable to me in the in last 4 years. Okay, and in 22-23, in the first 3 months, if my turnover crosses more than 20 CR, what would be the date of applicability based on the law that we have today? Any guesses? What would be the date of applicability? Would that be the date on which my 20 crore turnover has increased, crossed, or would that be some other date? Jignesh bhai, right? Thank you, Jignesh bhai. Loud shout out. Thank you. Next year. Okay, because this was the query many of my customers had this time, that they were almost crossing 50 crores and 51 crores. So they started activating e-invoice and they could not. The reason is that the government did not allow them to allow it. It is from the start of the next financial year. Okay. So what is it from the next year? Yes. Only KPR said date out to which it is crossed. No, my friend, it would be from the next year. Yes, yes, yes. Sejal. Okay, fantastic. Okay. Documents to be reported to e-invoice system. What are the type of transactions which are required? Okay, all B2B invoices, B2G invoices. By B2G, I mean is business to government. Okay, all the government based invoices I need to report. Export invoices, that includes invoices given to a unit which is registered in SEEPs. Reverse charge invoices for the users. Okay, not from not for the purchaser. So there is an invoice which I have to raise if I'm a purchaser. So whether I need to raise invoice for those invoice? No, I need not raise invoice for those. This reverse charge invoices is for those sellers who for whom reverse charge is applicable. Okay, all debit notes, all credit notes. Now, by meaning all debit notes or credit notes, that means any interest calculation you have charged anyone, you know, in your payment cycles, you have charged interest or you have charged commission or anything. Once e-invoice is applicable, you need to generate the IRN and you need to follow for all your sales and debit note and credit note transactions. So, okay, these are the documents that are needed to be reported to the e-invoice system. Okay.
whether e-invoicing is applicable for invoices between two different GSTNs. That means I have a factory at Ahmedabad and my branch office is in Mumbai. So once the goods are moving from Ahmedabad to Mumbai, whether e-invoice would be applicable since they would be under same PAN? The answer is yes, it would be applicable. Okay. Modes of generating e-invoice. Okay. So there are few modes of generating e-invoice other than TallyPrime. Just a general discussion. I would again request my colleague Hiral to give a brief of what are the different modes of generating e-invoice. Yeah. So first mode, if we talk about first mode, like which are the large taxpayers, like more than 500 CR turnover. So more than 500 CR turnover, only in that case, they can register, they can directly hit the API of the government portal. I mean, they get the direct access to for filing the e-invoice, and other clients who are less than 500 CR, like they are 100 CR, 50 CR, 20 CR, they can register on the portal through the GSP. Okay, the first option was direct connection, like no GSP is involved in this. The second one is direct entry on the portal, which can direct entry on portal means they can directly go on the portal and manually update, or they can manually update the e-invoice on the portal. Then the third option is the API ERP, which is the Tally comes into picture. So we can register API or ERP as the GSP. We can designate it as a GSP, and then through GSP, it will be uploaded on the IRP portal. The fourth option is the SMS. Through SMS also, if like they had mentioned, like if you put the data, put it in a certain way, then the e-invoice gets uploaded, gets filed. If you are sending the SMS to a certain number through to a designated number from your registered mobile number. Okay. Then the fifth option is from the mobile app, and sixth option is through the offline tools, Excel tools. Few customers are using, like if they are not using Tally, or if they are not using any other software. So I have seen somewhere that they are still using offline tools or Excel tools. It is very cumbersome to use those tools because they have 5 to 6 different formats, and you need to have a specialization to, I mean, you should know, better understand that which tool will be applicable for which invoicing. So it is a difficult tool difficult for choosing the things. So on the SMS and mobile app, I think it is available. The more information is available on the NIC portal, so that we can check and come back. But I think what Hiral mentioned was that we need to have a structured approach to send the information, like when you have seen a JSON file. So if you have seen, I don't know, but if you see a JSON file, it contains a bracket and based on that, you should have those number of characters and all those things. And based on that, you can, if you are typing the SMS in that particular format, then only it would be applicable. So today, our main aim of discussion is that we are going to use this API, that is ERP1. Okay, that is going to be our main aim of today's discussion. And let us move forward on the e-invoice part from Tally. Okay. Further, will IRP store or archive any e-invoice? No, it is just a pass-through mechanism. Now, on this, I had a question seen in the chat. Let me just check that. Suppose we made invoice on 8 March and the same. Okay. Ranjit, I will come on your question. Okay. Okay. So the IRP portal is a pass-through mechanism. It does not store any data. And the way in which the system is designed, my friends, it is on the basis of T+2. Okay. That is the base
is your transaction when you are uploading, not your transaction date, but uploading date. After that, 2 days, after 2 days after that, it would be available in your GSTR1 as well as in the GSTR2A or 2B of the customer. Okay, so it is T+2 mechanism, and within 20, the government is saying that after 24 hours, they are purging all the information on the IRP portal. They are not storing any kind of information on the IRP portal. So when you look at your GSTR1, you can look after 2 days, okay, that whether you have filed all the information that you have generated, whether that is available on your GSTR1. Yes, after 2 days of your uploading on the e-invoice. Okay, so I think there is a question out there from, or a hand raising from someone. Sanjay bhai, there is a hand raise, is it? Redmi 9A, please give your name, Redmi. Ranjit wants to raise hand. I think Sanjay is not available probably. But anyways, I will come on you. Sanjay, if you can share your question in Q&A, I will come back to you. And I think Ranjit, you should be able to unmute yourself and ask your question. okay, let's move forward. We can have a sandbox testing as well. Okay, so e-invoice at GST, and most of the information that I'm presenting today is coming basically from the NIC portal and some on from Tally Solutions portal as well. So one can refer those aspects also for more clarity. Okay, so as we see, technology is going to be a key enabler of this particular entire game. Okay, how technology can be a game changer. Let us see what is required. So a supplier generates invoice using ERP, goes on the IRP, that is invoice registration portal, and from there the IRP does a deduplication check, returns the digitally JSON with the QR code information in it. Okay, and then within, as I said, T+2 day, it sends the authenticated payload. By payload means that the entire information that it has got generated on the T day to the GST system. Okay, from there one can get the e-way bill as well as the e-way bill number. Okay, and after that invoice gets stored on the GST invoice registry, and if you see your GSTR1 on the portal, on the last column, you will get that this information, once you have generated an e-invoice, this information is coming from e-invoice. So they are giving the source of that information also, once it is coming through manually or whatever it is. So if this is a very critical system, and I see that in near future, one may not have to file the GSTR1 for B2B transactions, only B2C transactions would be required. Okay, B2B transactions would have to be just validated for all the users in the near future. Now, right now, only for 20 crore plus company, it is applicable. Yeah. Somebody wants to say anything? Sanjay? Okay. Buyer can use this QR code. I think Redmi is raising the hand on a continuous basis. I don't know the name. It is showing as Redmi 9A. Sir, Yes. you have any query? Sir, can I speak Hindi? हाँ जी Yeah. बिल्कुल बोलिए. बोलिए ना सर. सर ये ई-इनवॉइस ओनली B2B को बनाना पड़ता है और B2C को बनाना पड़ता है सर? नहीं, B2C को नहीं है. मेरा एक क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, शायद आपने मिस किया. B2C के लिए ई इनवॉइस नहीं है. ठीक है सर. तो सामने वाले का GSTN नंबर होना बहुत जरूरी है. ठीक है सर. सर वो हमारा एग्जेम्प्टेड गुड्स है सर, वो भी बनाना पड़ेगा ई इनवॉइस? नहीं, एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए भी नहीं है.
और एक ही टैक्सेबल वैल्यूज के बनाना पड़ता है जीएसटी का वोचना सर। हाँ, ठीक है एग्जेम्प्टेड, सर। अगर आपका एग्जेम्प्टेड गुड्स है और टैक्सेबल गुड्स दोनों एक ही इनवॉइस में जा रहा है तो आपको ई नहीं इनवॉइस सर। बनाना पड़ेगा खाली टैक्सेबल गुड्स के लिए, एग्जेम्प्टेड ठीक गुड्स है के लिए सर। नहीं। ओके सर। या सर वो इनवॉइस बनाने बाद में वो वे बिल भी बनाना पड़ता है उसको। हाँ, ई वे बिल जो बनाना है वो बनाना है। मैं अभी आज ई वे बिल के ऊपर कम डिस्कशन कर रहा हूँ, बट ई ठीक है इनवॉइस ठीक पे है सारा डिस्कशन है अपना आज। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके, so as we can see, we need effortless generation of e-invoice, quicker. Okay, it also requires, it has to get collected to your e-way bill too, because almost all 60 to 70% of the same information is being uploaded on the e-way bill portal also. Okay, and technology should help you in easy access to e-invoice data information, and it should also ensure smart validation for ensuring the right compliance. Okay, so these are the key technology points. Okay, and Tally India Private Limited is a GSP, and just to give a brief, what role does a GSP plays? Okay, friends, I have seen once this 500 crore turnover was implemented for e-invoice for 500 crore plus, 100 crore plus, and 50 crore plus. The GSPs were charging a huge amount on per invoice basis, and Tally is also one amongst that range of GSPs, but it never charged on per invoice basis. So what is the role of GSP in e-invoice? Okay, so these are the work that the GSP does. Okay, it authorizes it is an authorized intermediary to connect businesses to IRP. Okay, not anyone and everyone can go to IRP and just say, okay, now I need to send this information through API. Okay, because this API is on an automated mode, we need to have an authorized person only through which we can connect. Okay, and these GSPs, including Tally, of course, use secured APIs. Okay, they have got these APIs from the government of India itself. And I'm very happy to inform that while this API was developed, our CA Institute played a very big role in designing these APIs and making this e-invoice template a secured or a perfectly workable template. Okay, so GSP solve aspects of availability, scalability, and reliability. Okay, these are the main aspects of GSP, which ensures that e-invoices requirements are always met. Okay, so you need to have an integrated system to remain on the top of your compliance. Okay, right. So what do we do for getting that e-invoice solution without disrupting your business processes? Now let us look at it from our aspects. Okay, so what are the aspects? The moment you are generating the invoice, it is coming in your TallyPrime. From TallyPrime on an automated mode, it is going to GSP, and from there it is going to IRP. IRP is immediately sharing this information to GSP and to TallyPrime, and then finally the QR code is updated on the invoice. Okay, so this is the entire cycle, and we will see how this cycle is working. Okay, before that, let me take you to Tally first. What are prerequisites in Tally? F11. Okay, F11, you have to go out here under GST, and under GST you have to select is e-invoice applicable. Okay, if it is applicable, from which date it is applicable? For those companies where 20 crore plus turnover is applicable, from 1st April 2022. Okay, bill from place. So your screen is not clearly visible. My screen, is it? Now? Yeah, now it is coming. Now it's better.
Okay, okay. Yes. Okay. So here we should ensure e-invoice is applicable, from which date it is applicable, and bill from place. Okay, bill from place is got a very important aspect, and that aspect Hiral will again give a brief of why this bill from place is important for you to mention. Yeah, Hiral. Yeah. So bill from place is nothing but from where you are majorly sending the goods. So in case you are sending your goods from Bangalore, I mean generally we write city name, not a specific place name. So in case we can write Bangalore, or we can write even Mumbai, if it is getting dispatched from Maharashtra, or whichever place our location is there. So this will nothing but if you've mentioned it here while generating the e-invoice, it will ask you two more things, like it will ask you bill from place and no, bill to place and ship to place. Okay, so that part it will this will actually fetch in the e-invoicing details directly from the from the F11 features where we have mentioned here. So bill from place will be it will Yes. be fetched. So my friends, what Hiral is wanting to say is that bill from place, we need to mention it for our working in F11, but at the same time this will be coming from here to as a default in our invoicing. I will, while I am generating the invoice, I will showcase you, I will pause for a second and inform you that this information has come from my F11 features. Okay, so this is very important. Okay, default period for e-invoice report. Currently, Tally has given, or rather, it was originally planned that for 3 days only the e-invoice report should be available. But you can make it 7, you can make it 10, because right now there is no such validation that the government of India has made it. Okay, and whether the user wants to send e-way bill details along with e-invoice. So if we set it as yes, then only the information related to e-way bill will be transferring. Okay, that is part A and part B details. But otherwise, if it says no, then only the e-invoice details would be going to the client, going to the IRP portal. Okay, so I will just go to now. Sanjay, is the screen visible? Sanjay? Yeah, just a moment. Yes, it is visible. Yes. So, friends, now I'm generating an e-invoice. We'll see how it is generated. We have activated it in F11. Now we will generate an invoice. So, place of supply. Friends, this place of supply is something that is going to come from F11. It's little blur. Right. थोड़ा blur हो रहा है. Is it? Abhi? Blur है अभी भी. Amount is not shown clearly? No. Shall I change the resolution of my screen, Sanjay? What is the resolution you have taken?
Change it to 1024,768 and above. Yeah, 1 second. What I'll do is I'll quickly answer the questions which has come Yeah. on the chat. So there was one question which was saying that if bill from my branch, which is at one state, but accounts were maintained at the other state. So Sashiji, if you can, elaborate a little more on that question. This is, I think, only half part. In case of two places from same city, I think the question was related to bill to and ship to. So Pradeep Jainji, if you can just emphasize a little more on the question, so we can answer it. Credit note for sales return of e-invoice is applicable. Yes, it is applicable. How do we generate sales debit note in Tally? Sales debit note is control F8. Using control F8, you can generate the. Okay, but sales debit note, there is nothing called sales debit note. It can be a debit note which is through correction of your maybe transaction by a rate or maybe some quantity. There is nothing called sales debit note, right, sir? Yes. It can be either debit note or a credit note. ऐसा sales debit note or purchase debit note or sales credit note or purchase credit note ऐसा नहीं होता. नहीं, राइट है, सेल्स इनवॉइस ही होना चाहिए, सेल्स डेबिट नोट जैसा कुछ नहीं होता है. और वो जो डेबिट नोट्स है वो परचेज के लिए हम लोग को यूज करना चाहिए और क्रेडिट नोट्स यूज करना चाहिए. दैट इज व्हाट द आइडियल सिस्टम इज. आई विल शेयर स्क्रीन वंस अगेन. विल सी वेदर देयर इज अ. Okay, so Sashi ji ka question is Sashi Bhushan Pandit. For bill to ship to, F11 setting needs to be changed regularly. नहीं. Okay. Do not require. How is it, B? एक second. Yeah, this is better. ये हमने F11 का स्क्रीन देखा था, बिल फ्रॉम प्लेस और ये. सो देयर इज नथिंग दैट आपको F11 में बार बार जाना पड़ेगा. ये आपको जस्ट आपके मेंशन करने के लिए कि फ्रॉम वेयर यू आर जनरेटिंग इट. It need not have a proper specific address like Koramangala or suburb और वो particular चीज है. आप within a city या overall एक brief दे सकते हैं to for this to operate. Okay, so this is what it is. And then we were on this. Is it visible now, Sanjay? Yes, very clearly. Okay. So ये हम लोग का invoice है. When we are generating an invoice, we are selecting the item name. And once we select the item name, quantity, rate, we can put the rate. We can put the value. Sales account select किया. We select the GST account. That's it. We provide the e-invoice details. Okay, bill to ship to, this we may need to mention. The first question that is going to be asked, do you want to generate e-invoice? Yes or no? The moment you say yes, it will ask for the username, which is registered when Hiral had explained during the day how you need to go on your IRP portal. From that you will get it. E-invoice generated successfully. So within fraction of seconds, okay, the IRP portal is very fast, and Tally has matched that speed also. Okay,
the details of details are uploaded in the transaction, and we see our preview. That's it. Okay. Now this is come. If you see, the QR code has come on the right hand side of the top of the invoice. IRN number has come, acknowledgement date, number, acknowledgement date. This has come. Okay. Okay. So this was the basic e-invoice generation. Okay. And from there, we can also generate it from e-invoice as well as e-waybill. Let me showcase that as well. E-invoice along with the e-waybill. Select the ledger. Okay. अपने वो मुंबई का वो रूम का अलग से क्रिएट करना है तो Okay. And here we need to ensure we are putting in all the e-invoice and the e-waybill details. E-waybill details. Vehicle number. Friends, if you want to raise only e-waybill, that is also possible. If you want to raise only e-invoice, that is also possible. Tally gives you flexibility of all the options. Do you want to generate e-invoice and e-waybill? And that's it. E-invoice and e-waybill are generated successfully. Right? Tally can also offer a flexibility to generate a JSON file offline. Okay. So for that, one needs to go to Tally while they have raised the invoice. Okay. So if I'm in an invoice, one second. Okay. So here we can select e-invoice, send for e-invoicing. Okay. From here we can give button for offline export. Okay. So from there, this when we go to this exchange report,
we can opt for this offline export as well. Okay, it is not only manual export, but we can also select this option. So in case internet is not available, you are still able to generate the JSON file, offline JSON file. You can take that JSON file and import it on your IRP portal. You will be able to generate the IRN as well. Okay. So e-invoice report, to get the bird's eye view, let me go through the e-invoice report, what it is. So once you go to this, go to e-invoice. Okay. So here, if you see, here you are getting a bird's eye view of entire options, whatever it is. Okay. Whether there is a missing or invalid information, rejected by e-invoice system for IRN generation, IRN cancelled, okay, marking for IRN cancelled, and so on and so forth. So you can get all the information from here. You can also go to this IRN register, which is my favorite register, which gives all the details as to what and how things are. So for each transaction, my GSTN number and what is the e-invoice status. So if you see exported for IRN generation or marked as IRN cancelled, every information is there. Okay. So one can look at this two reports, that is IRN register as well as the e-invoice report. They are a bird's eye view. It is coming as a clubbed system as to how things are. Okay. So I think this is something really wonderful that you can at one go look at both e-invoice and IRN system both. Okay. Atul Bhai says, how many e-invoice can be generated? We can generate it one by one, and we can generate it at bulk also. Okay, I have a Q&A FAQ for that as well. But just to give a brief, that if you go to this exchange and in how much time you can select all for sending that whatever number of e-invoices that you might have raised, आप सबको एक साथ में you can send it together, maybe 3, 5, 10, 50, whatever it is. So there is no limitation as such, as I understand, for generating this. हेलो, Yes. हाँ जी, मेरी क्वेरी और थी, ये जो ई इनवॉइस है हम कितने टाइम में जनरेट कर सकते हैं? तो जैसे कि अभी मैंने जब बिल निकाला तो उसका मुझे मतलब 24 आवर्स में करना पड़ेगा, 24 आवर्स के बाद भी मैं ई इनवॉइस निकाल सकता हूँ? कौन बोल रहे हैं? अतुल भाई? हाँ जी, अतुल बोल रहा हूँ। जब ई इनवॉइसिंग सिस्टम एप्लीकेबल हुआ था ना, उसके बाद अलाउ नहीं है, बट एज सच अभी गवर्नमेंट 1 महीने तक भी अलाउ कर रहा है, बिकॉज ये सिस्टम नया है, इसलिए अभी गवर्नमेंट 1 महीने तक भी अलाउ कर रहा है। बट मेरा सजेशन ऐसा है कि आप आपकी GSTR 1 फाइल हो उसके पहले इंश्योर करो सारे आपके ई इनवॉइस जनरेट हो जाए, क्योंकि आपने अगर नहीं जनरेट किया है तो सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिलेगा, सामने वाला परचेज ही बुक नहीं कर पाएगा। तो जनरली ई इनवॉइस के बिना आपका इनवॉइस ही वैलिड नहीं है। ओके, तो माय सजेशन इज दैट द मोमेंट यू हैव रेज्ड योर इनवॉइस, अगर वो कंफर्म हो गया है तो जनरेट ई इनवॉइस, डू नॉट वेट फॉर इट। हाँ, कुछ एक क्लाइंट्स ऐसा भी कर रहे हैं कि मॉर्निंग से सारे ट्रांजैक्शंस का वो अपलोड कर देते हैं, डेटा अपलोड कर लेते हैं, बट वो सिक्योरिटी कंट्रोल में टैली में ब्लॉक करके रखा है उन्होंने कि वो यूजर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकता है, और शाम को साथ में वो एक साथ में ई इनवॉइस जनरेट कर लेते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वर्क अराउंड, आई विल नॉट से इट इज परफेक्टली वैलिड, बट आप करना चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं। आइडियली इनवॉइस के साथ में ही ई इनवॉइस जनरेट होना चाहिए, बिकॉज विदाउट ई इनवॉइस योर इनवॉइस इज नॉट वैलिड। अगर आपको किसी ने पकड़ा रास्ते में आपके गुड्स को और उस वक्त वो इनवॉइस दिखाया, और अगर वहां पे आपको आपकी कंपनी को ई इनवॉइस एप्लीकेबल है और उस पर QR कोड नहीं है, तो द ऑफिसर कैन गिव अ पेनल्टी और फाइन आपको चार्ज कर सकता है कि आपके इनवॉइस पे QR कोड नहीं है और ये वैलिड इनवॉइस नहीं है। ओके, उसका सेक्शन 31 अलग से है, पूरा एक वर्किंग के हाउ डज इट मेक्स अ प्रॉपर व्हाट इज डज मेक अ प्रॉपर ई इनवॉइस। ओके,
सो एक आप ध्यान में रखिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, एक कई और थी, जैसे कि अभी कुछ इन्होंने B2C के लिए भी कहा था ना कि B2C का भी यदि ई इनवॉइस है तो उसमें आपको QR कोड देना जरूरी है। आप उसमें हाँ, IRN नंबर जनरेट नहीं होता, तो वो कैसे होगा इसमें? हाँ, B2C के लिए आपको QR कोड बैंकिंग का देना जरूरी है, नॉट दैट ऑफ जो IRN नंबर का नहीं है। ओके, आपको B2C का QR कोड है, आपके टेली पार्टनर है, आप हमारे पास या आपके टेली पार्टनर के पास वो कस्टमाइज कर सकते हैं आपके इनवॉइस में, वो QR कोड प्रिंट हो सकता है। तो वो बैंकिंग वाला है वो? हाँ, वो जो जैसे पेटीएम का होता है, पेटीएम का, फोन यस पे का। यस यस यस, यू आर वेरी राइट अतुल भाई। ओके, वैसा तो वो आपको देना खाली जरूरी है। पेमेंट कलेक्शन के लिए कि आप डिजिटली पेमेंट कलेक्ट कर रहे हो, आपको वो एनेबलमेंट दिखाना है गवर्नमेंट को। ओके ओके। हाँ, वो कंपलसरी नहीं है फॉर B2C, मतलब उसके लिए नॉर्मल ITC के लिए कंपलसरी नहीं है। ITC के लिए कंपलसरी नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ, ओके, थैंक यू। यस। आई एम नॉट लुकिंग एट चैट। संजय भाई, अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए। Sir, I'm trying to answer. अगर कुछ लग रहा है तो I'll tell you. यस यस, But still there are few questions. So आप एक दो अगर questions अभी ले लेंगे तो अच्छा रहेगा. अच्छा। Chinanand sir says e-invoice applicability for financial credit note and debit notes where GST is not applicable. The question is whether GST is not, उसका नहीं है in my view. Okay, अगर आपकी कंपनी को e-invoice applicability है, there are some companies to whom, or there are some types of business to whom the e-invoice is not applicable, like movie theaters, like financial institutions. तो अगर आपके वो बिजनेसेस हैं जहां पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है, तो आप उसकी जनरेट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका रेगुलर टाइप ऑफ बिजनेस है, इट इज अ रेगुलर बिजनेस फॉर विच यू आर जनरेटिंग अ फाइनेंशियल इनवॉइस on which you will have to generate it through e-invoice. That is my understanding. You may ask your e-invoice consultant again. Hiral wants to share anything. By that, आवाज नहीं आ रही है हिरल की. चिनामन जी, आपका आई थिंक कहना ये है कि शायद वो जो डिस्काउंट का क्रेडिट नोट या डेबिट नोट आपने क्रिएट किया है जहाँ पे GST इम्पैक्ट नहीं है, तो वो केस में आपको ई इनवॉइसिंग फाइल करने की जरूरत नहीं है। नहीं, करना पड़ेगा हिरल भाई। GST का इम्पैक्ट आपको हर एक डेबिट नोट क्रेडिट नोट में लेना है, और आपको उसके लिए ई इनवॉइस भी फाइल करना है, वैसा है। Can we cancel e-invoice within Yes. how much time? On that, Jugal bhai, yes, we can cancel e-invoice. I will show you a small video on that, how to cancel that, and in 24 hours. Technically, actually, it is day end. आज के दिन में कल रात तक आप कर सकते हैं. It is more than 24 hours sometimes, but government ने इसको 24 hours का time limit दिया है. You can cancel an e-invoice within 24 hours. My suggestion or my request or Tally's request or this, you should not use the same invoice number once again. अगर आपने एक इनवॉइस नंबर जनरेट कर दिया है, आपको सेम इनवॉइस के लिए जनरेट नहीं करना चाहिए. ओके, आई विल शो यू हाउ टू कैंसल द ई इनवॉइस. Shivbhushan ji लिख रहे हैं, if we issue e-invoice at the end of the month before GSTR1, the person is getting e-invoice without QR code which is invalid, so we need to send a fresh invoice again. So Shivbhushan ji, आपने जो स्टेटमेंट बोला ये करेक्ट है. ओके, अगर QR कोड ही नहीं है e-invoice के ऊपर तो वो तो वैलिड होगा ही नहीं. या यू आर वेरी राइट. आप लेकिन ये आप मंथ एंड तक मत रहने दीजिए. इन द मीन टाइम, अगर, क्योंकि आप जैसे ही ई इनवॉइस जनरेट करोगे, सामने वाले को भी GSTR 2A में दिखेगा या 2B में दिखेगा. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट आप जितना जल्दी जनरेट करके ई इनवॉइस भी जनरेट कर लेते हैं, सो दैट यू बोथ आर श्योर कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हो गया. राइट सर. Cancellation of e-invoice, I think this is one of the query. You go to the report from go to e-invoice. Okay, so there you will get the list of all the IRN generated, जो मैंने report दिखाया आपको. From there you have to click on spacebar, and on the right hand side there is a cancellation button. Mark as cancelled.
once you mark it as cancelled, okay, then it will be shown in a separate bucket, mark IRN as cancelled, and उसके बाद में आप मार्क IRN as cancelled करने के बाद में अपडेट करना है उसको, so you have to again click on Alt R, that is cancel IRN, and after that update cancellation में you have to give the reason for cancellation, providing the remarks. ये आपको आपका E-invoice का cancellation details provide करना है. And then you have to go to Alt Z, exchange. Sir, Okay. is it applicable on the exempted goods as well? E-invoice is not applicable on exempted goods. मैंने पहले भी इसका, as per my understanding, it is not applicable. For IRN cancel, do you want to continue? Yes. आपका user ID and password देके. Okay. Next is, there are a few more questions. And that's it. What if E-invoice is not cancelled within 24 hours? हाँ, उस केस में क्या करेंगे? अगर आपने 24 घंटे में कैंसिल नहीं किया तो क्या करेंगे? In my viewpoint, you will have to, now this is a practical working, कि अगर आपने इनवॉइस जनरेट किया, मैंने संजय के ऊपर ई इनवॉइस जनरेट कर लिया है और आफ्टर 24 आवर्स आई नीड टू कैंसिल दैट, संजय ने एक्सेप्ट नहीं किया कोई फॉर वॉट एवर रीजन, देन आई विल हैव टू रेज अ क्रेडिट नोट, ओके, एंड उसमें मेरे को ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स डालना पड़ेगा एंड उसके बेसिस पे वर्किंग होगा, एंड वो क्रेडिट नोट पे भी ई इनवॉइस जनरेट होना चाहिए. क्रेडिट नोट आल्सो हैज टू बी रिपोर्टेड ऑन द ई इनवॉइस पोर्टल. Perfect. That's right. So we did this status of each e-invoice, cancel, generated, rejected, ये हमने कर दिया, okay, and generate IRN for pending invoices. जैसे आप एक साथ में security enable करके you can ensure that आप साथ में generate कर रहे हैं, bulk invoice generate कर रहे हैं, okay, and Tally also allows update IRN for different software. If you have generated IRN from different software, okay, खाली इधर स्टोर करने के लिए रखना है तो वो भी आप अपडेट कर सकते हैं, okay, that is also allowed. And in case you wish to put it manually, you can also go ahead and put the information manually, okay. Modification, ये जब आपने मेरा रिपोर्ट एक देखा था टैली में आयरन पोर्टल पे, इधर जब आप मैं गया था ई इनवॉइस रिपोर्ट पे, ओके, तो यहाँ पे मैं आयरन रजिस्टर में गया था एंड हियर इफ यू सी टैली आइडेंटिफाइज कि ये मॉडिफाइड ट्रांजैक्शन है, ओके, सो यहाँ पे उसने ऑलरेडी बता दिया है कि भाई ओरिजिनल transaction date, transaction amount was 1120 and now this is modified as 1344, okay, so and original IRN generation date was 10th December 20, okay, so this is how Tally is keeping track of any information. अगर आपका पीछे से modify हुआ है from the IRN register, you will be able to see it. What I suggest to my client on an automated base कि आप जो भी invoice generate किया है उसका PDF एक generate कर दीजिए immediately, so that you are having a physical copy or rather PDF copy of the invoice, okay, so that is also possible. And फिर अगर पीछे से modify हुआ है, you are having a clear cut idea as to what this transaction was, but इधर भी आपको दिख जाता है. Tally also allows you to see how this transaction is available, okay, earlier it was 1120, now it is 1344. So Tally allows this e-invoice modification हुआ है तो वो भी देखने के लिए, okay. IRN cancellation due to duplicate entries, data entry, अगर आपको cancel करना है, we saw how that IRN has to be cancelled. So there is one question. Yes, please go ahead. E-invoice applicable to any company, but company give invoice without E-invoice. हाँ.
Okay, so can the buyer or the receiver get ITC on that? The government can reject your ITC. So can it get or can it not get? It is a question of more of a law. In my viewpoint, the government can reject the ITC. Of course, then when there is a question of law, you can always present to the government that this is what the facts of the case is and fight it out. But looking at the overall scenario, it is better that आप किसी से भी परचेस कर रहे हैं, उनका GSTN नंबर लीजिए और NIC पोर्टल पे जाके सर्च कीजिए, उधर आपको लिस्ट मिल जाएगा कि उनका GST, उनको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है या नहीं. अगर उनको एप्लीकेबल है तो देन यू कैन रिक्वेस्ट देम दैट प्लीज जनरेट ई इनवॉइस एंड देन सेंड इट टू मी. इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. आपके NIC पोर्टल पे गवर्नमेंट ने सर्च फैसिलिटी दी है. इट इज अ फैंटास्टिक फैसिलिटी. आपको एप्लीकेबल है, आपके वेंडर्स को एप्लीकेबल है कि नहीं है. दे आर इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट वे showcasing all the information. Okay, and how many of you know that आप ये जो information GSTN validation है, okay, I'm not talking about the turnover validation, but ये tally में से भी कर सकते हैं. Okay, so maybe on some other time we can discuss on that. Okay, there are few more questions. Devendra, we have already identified we cannot modify, amendment is not possible. Cancellation is to be within 24 hours. प्रदीप भाई, मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर लिया है. थैंक यू शशि फॉर इन्फॉर्मिंग फैबुलस फीचर्स. यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड. इनवॉइसेस रिजेक्टेड बाय IRP. सो अगर आपने देखा मेरे ई इनवॉइस रिपोर्ट में, टैली के जो ई इनवॉइस रिपोर्ट था, वहां पे काफी सारे रीजंस था. Now, ये जो rejections हो रहा है, that is basically because of certain do's and don'ts which are not followed by the assessees. I will take some of those do's and don'ts in a very short way. मैं आपको मेरा जब आगे का presentation है कि क्यों reject होता है, some of those we have मैं आज के discussion पे लिया है. But more or less one can understand that अगर आपका GST बराबर से applicable नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं पे एरर आने वाला है. ओके, सो देयर आर रीजंस फॉर रिजेक्शंस भी दिया हुआ है. अगर मैं ई इनवॉइस रिपोर्ट में जाऊं तो यहाँ पे मिसिंग एंड इनवैलिड इंफॉर्मेशन, जैसे HSN इंफॉर्मेशन इनवैलिड है, ई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ई इनवॉइस पोर्टल इज नॉट प्रोवाइडेड, जैसे ये बायर बिल टू प्रोवाइड. सो टैली आपको बाय डिफॉल्ट एक ऑथेंटिकली आपको इंफॉर्मेशन देता है कि आपने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं भरी है, इसलिए ये आपका इंफॉर्मेशन रिजेक्ट हुआ है. ओके, सो हियर मिसिंग एंड इनवैलिड इंफॉर्मेशन करके टैब में यू विल गेट दैट इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सॉफ्टवेयर. आपको अगर उनका जो IRN इंफॉर्मेशन है उसका डिलीट हो गया है, ओके, so that you can get it reset and take the new invoice. But my suggestion is that always cancel that invoice also and take the new invoice. Okay, in case you want to cancel it, आप हमेशा पुराना इनवॉइस भी पूरा कैंसिल कीजिए और नया इनवॉइस नंबर जनरेट करके अपडेट कीजिए, rather than deleting any invoice from the tally system. Okay, sir, in case of internet breakdown or disconnection in the connectivity, so is there any relaxation or anything under the service maintenance or something? ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, ऑफलाइन जेसन. करेक्ट. सो आप ऑफलाइन जेसन से आप जेसन फाइल जनरेट कर सकते हैं और फिर अपलोड कर सकते हैं. But there is no relaxation as such, right? No, I'm not aware of any relaxation. Maybe floods, और उस वक्त अगर गवर्नमेंट का, मैंने जब लास्ट टाइम अपने एक स्टेट में फ्लड आया था तो वहां पे गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया था ई-वे बिल रूल्स. ई इनवॉइस का मैंने नहीं सुना था, बट ई-वे बिल रूल्स को रिलैक्स किया था. So it would be based on the circular that the government brings in. I'm not sure whether otherwise it is allowed. मतलब अपने हिसाब से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है और अभी मैं 10 घंटे बाद में करूंगा या 2 दिन बाद में या 10 दिन बाद में करूंगा. Whether that is allowed or not, I'm not sure about it. I think it is not. Date or time भी होता है क्या? हाँ? E-invoice contains date and time also, like time stamp also. Does E-invoice
carries the date and time information as well? Yes, yes, yes. E-invoice does carry the date and time. मैंने बताया तो साथ में आपको acknowledgement date and acknowledgement time आ जाता है उसमें. Okay, right. So yeah. RCM के केस में E-invoice एप्लीकेबल रहेगा क्या? RCM के केस में there are two scenarios. एक जो आपका सेल हो रहा है उसमें आपने इंफॉर्मेशन किया कि my sale is on the basis of RCM. For that, yes, you will have to generate the E-invoice. और एक जो आपका परचेज है, जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन है या लीगल चार्जेस का परचेज है, उसके बेस पर आप सेल्फ इनवॉइस जनरेट करते हैं, तो वहां पे आपको ई-इनवॉइस जनरेट नहीं करना है. ओके, मतलब सेल्स के केस में करना है यदि हम सेल्स कर रहे हैं तो. यस, आप सेल्स कर रहे हो और एज पर लॉ आपको आरसीएम में एप्लीकेबिलिटी दिखाना है इन द GSTR1, तब आपको ई-इनवॉइस उसका जनरेट करना है. तो जैसे कि मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हूँ और मुझे अपने जो ट्रांसपोर्ट जो अपना क्लाइंट है. सॉरी, आपका नाम क्या? अतुल मित्तल. अच्छा अतुल जी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इज एग्जेम्प्टेड. ओके, गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी एग्जेम्प्टेड है, लेकिन कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं है, वो नॉर्मल जैसे थर्ड पार्टी होती है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का बिल जनरेट करती है. मतलब आप थर्ड पार्टी से सर्विस ले ली GTA की एंड फिर अपने क्लाइंट को दे दी, ठीक है. तो उस केस में यदि कोई थर्ड पार्टी जनरेट करती है तो उस केस में वो GST लगाती है, ठीक है. तो उस केस में वो जनरेट होगा उस केस में इनवॉइस. मतलब आप बोल रहे हैं थर्ड पार्टी ने इनवॉइस जनरेट किया मेरे बिहाफ पर? हाँ जी, हाँ जी. हाँ, तो टैली ने वो भी सिस्टम, जो मेरा इसके पहले वाला स्लाइड था ना, कि जहाँ पे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ने मेरे बिहाफ पर अगर ई इनवॉइस जनरेट किया है, मैं अगर वो इनवॉइस नंबर मैच करेगा तो मैं वो IRN मेरे सॉफ्टवेयर में इम्बेड कर सकता हूँ. ओके, हाँ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. वो टैली ने ऑलरेडी सिस्टम में दिया हुआ है. ओके, राइट. हाँ, so there are many alerts which have been provided कि अगर आपका एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन वगैरह हो गया तो उसका अलर्ट ऑलरेडी आ गया है. अच्छा, एक जो चीज मैंने नहीं बताया है या एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो टैली अभी आपका तारीख कौन सा है? 15 मार्च. ओके, सॉरी 9 मार्च. एंड आप 1 अप्रैल से रेडी होना चाहते हो, तो 1 अप्रैल से जाओगे तो 1 अप्रैल को अगर एप्लीकेबिलिटी करने जाओगे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ ना हो, तो आप किस तरह से अपने आप को रेडी कर सकते हो? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ना सैंडबॉक्स दिया है और आप सैंडबॉक्स की वर्किंग कर सकते हो. सैंडबॉक्स इज नथिंग बट अ ट्रायल पोर्टल, और वो ट्रायल पोर्टल पे वर्किंग करने के लिए आपको F11 में जाना है और यहाँ पे आपको मोर डिटेल्स में जाना है. ओके, मोर डिटेल्स में जाके शो मोर, शो इनएक्टिव, और यहाँ पे एनेबल सैंडबॉक्स एक्सेस. ओके, तो जैसे अभी आपके पास 10 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक का टाइम है, आप इसको सैंडबॉक्स एक्सेस कर सकते हैं, इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, और इसमें सारा डिटेल्स जो ई-इनवॉइस का जो डिटेल्स है यहाँ पे, ओके, इन द ई-इनवॉइस पोर्टल के आपको क्या है, इंस्टेड आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं डिटेल्स. ओके, बट डू इट इन डमी डेटा, डोंट डू इट इन लाइव डेटा. और इसमें आप जो NIC पोर्टल का जो डिटेल्स है वो आप प्रोवाइड करके आप यू कैन देन गो फर्दर ऑन दैट. ओके, प्रदीप जी, आपका कुछ क्वेरी है? हाँ सर, मेरा नहीं, सुनाई नहीं दे रहा प्रदीप भाई, सॉरी. पहली प्राइम प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर. अभी सर अभी आ रही है आवाज? जी. हेलो. जी सर. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मैं पहले से टैली प्राइम जैसे यूज कर रहा हूँ, तो क्या उसमें ये फैसिलिटी है ई इनवॉइसिंग की पहले से? जी, पहले से आपको टैली प्राइम का रिलीज चेक करना है आपका. अगर आपका रिलीज 1.1 के ऊपर है तो यस, ई इनवॉइस की कैपेबिलिटी है. अगर आपका रिलीज 1 है या उसके नीचे का, मतलब सॉरी 1 है, तो वो नहीं है. ओके, तो सर मुझे फिर क्या नया इसमें एम्बेडेड करानी पड़ेगी नई फैसिलिटी को? नया अपलोड कर दीजिए रिलीज, दैट्स इट. और कोई रिलीज आएगा वो आप अपग्रेड कर लीजिएगा, नया रिलीज 2.1 आ जाएगा जब भी, अब वो ले लीजिएगा एंड इट विल बी अवेलेबल फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, या मे बी शायद 15 मार्च तक आ जाएगा. तो आप बाकी इसके लिए, अच्छा, बाकी इसके लिए कोई अलग से कुछ चार्जेस पे करने का, या GSP फैसिलिटी वगैरह के लिए कुछ? टैली ने चार्जेस का, मैं इसमें आता हूं, आपके बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग विद टैली. ओके,
दूसरे DSPs ने पर ई-इनवॉइस पर API चार्ज किया है, बट टैली ने वैसा कोई चार्ज नहीं किया है। टैली ने खाली एक जो बताया है कि आपके सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन जो है, जो आप रेगुलरली एवरी ईयर लास्ट काफी सालों से भर रहे हैं, वही आपको अपडेटेड रखना है, तो ही आपको ये सर्विसेज मिलेगी। चाहे आप 1 जनरेट कीजिए, 10 जनरेट कीजिए, 15 जनरेट कीजिए, 50 जनरेट कीजिए, 5,000 जनरेट कीजिए या 50,000 जनरेट कीजिए, टैली को उससे कोई लेना देना नहीं है। इट इज नॉट आस्किंग फॉर एनी चार्ज बेस्ड ऑन योर ई-इनवॉइस नंबर्स। ओके, देयर इज नो सेपरेट चार्ज। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बिकम अ टैली ई-इनवॉइस कंसल्टेंट एंड इट विल हेल्प यू टू, मतलब उसमें कोई साइड के चार्जेस नहीं होते दूसरे। बट अब अगर आप सैप में हो या आप कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में हो, तो आपको छोटे छोटे चार्जेस पीछे पीछे से आते हैं, विच इज वेरी मतलब वो एक कम्बरसम हो जाता है व्हेन यू आर वर्किंग एज अ कंसल्टेंट। तो सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि इसके ई-इनवॉइसिंग के बारे में कोई ऐसा कुछ बनाया हुआ है कोई मॉड्यूल की कैसे इसको जनरेट करें, कैसे क्या प्रॉपर वे में वीडियो या कुछ ऐसा जो टैली की साइट पे मिल जाए हमें? हाँ, टैली के साइट पे काफी सारे हेल्प फाइल्स हैं, वहां पे उन्होंने ई-इनवॉइस के ऊपर भी कुछ अपडेट किए हैं। हेल्प फाइल्स का डिटेल संजय भाई थोड़ी देर में आपको चैट पे डाल देंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। कुछ एक वीडियोस भी रहेंगे, वहां पे देख सकते हैं, तो वो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। थैंक यू सो मच सर। हाँ, मैंने मेंशन कर दिया है। हाँ, ओके ओके सर एक क्विक क्वेश्चन है, while generating e-invoices, so B2B transaction and value is 40,000, so obviously ई-इनवॉइस को ट्रांजैक्शन वैल्यू से रिलेटेड नहीं है। ई-वे बिल यस ट्रांजैक्शन वैल्यू से रिलेटेड है, ई-इनवॉइस इज नॉट रिलेटेड टू दैट। ई-इनवॉइस आपको एनी एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन B2B आपको करना ही करना है। ओके, सो ई-वे बिल यस बेस्ड ऑन योर number of kilometers as well as on the values, it is dependent in, for some state it is different for different states, but e-invoice के लिए नहीं है। ओके, फर्दर जैसे मैंने वो पूरा ई-इनवॉइस का स्क्रीन दिखाया था, तो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, आपको एरर्स कहाँ पे मिल जाएगा और आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, एंड वो करेक्शन करने के बाद में आप अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने बताया था 1.1 जो है फाइनली ये आपके जो टोटल पॉइंट्स है वो एप्लीकेबल होंगे। ओके, सो एबिलिटी टू जनरेट ई-वे बिल, ई-इनवॉइस तुरंत साथ में कर सकते हैं। इंट्यूटिव प्रीव्यू रिपोर्ट हमने देख लिया, हमने एमआईएस रिपोर्ट्स देखा, वेरीफाई स्टेटस टू परफॉर्म एडिशनल एक्टिविटीज लाइक कैंसल है, गेट ARN इन्फो अगर हमारा दूसरे सॉफ्टवेयर से आ रहा है, एंड फाइनली प्रिंटिंग ऑफ टैक्स इनवॉइस विद QR कोड इन वेरियस फॉर्मेट। ओके, सो ये हम लोग प्री प्रिंटेड स्टेशनरी पे भी कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत कस्टमाइज करेंगे तो वो आपका जो QR कोड है वो लेफ्ट राइट कहीं और अगर आपको प्रिंट करना है, बाय डिफॉल्ट वो राइट टॉप राइट कॉर्नर में प्रिंट कर रहा है, बट आप वो कस्टमाइज करके आपको अगर बीच में चाहिए इनवॉइस के तो बीच में भी प्रिंट कर सकते हैं। बट वो QR कोड का एक साइज है 1 इंच बाय 1 इंच इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो 1 इंच बाय 1 इंच होना चाहिए। छोटा सा QR कोड होगा तो वो रीड नहीं करेगा। ओके, सो लेट अस लुक एट मेक फर्दर। ओके, सो फाइनली जैसे हमने देखा है कि ये ई-इनवॉइस कितना यूजफुल है, टैली में से इजी टू इम्प्लीमेंट है। इन एन ओवरऑल सिनेरियो, वन मोर एक्रोनिम इज दैट MRF। बेनिफिट इसका ये है कि फेक इनवॉइस, आज अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी रूल्स लास्ट 2017 से 2021 तक 22 तक जो भी लाए हैं ना, उनका सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट रहता है कि यार ये फेक इनवॉइस को कब करना है, फेक इनवॉइस को कब करना है। तो जितना ई-इनवॉइस का प्रचलन ज्यादा होगा तो फेक इनवॉइस की जो मीनेस है वो कम कम होती जाएगी और रादर नहीं होगी। ओके, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, आपको अभी ऐसा लगेगा कि नहीं यार अभी इंप्लीमेंट करना है, उसका पैसा लगेगा, API का पैसा लगेगा, वैसा नहीं है। तो ओवरऑल अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अगर देखने जाए तो बहुत कम हो जाएगा, और रादर नहीं हार्डली कुछ मिनिस्क्यूल पैसे में होगा, बिकॉज आप डायरेक्टली QR कोड जनरेटेड ई-इनवॉइस PDF में भेज रहे हैं सामने वाले कस्टमर को, एंड वो पेपरलेस पेपरलेस वर्किंग हो जाएगा उसमें। सो आपका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग है, कॉस्ट ऑफ प्रिंट सेंडिंग इट टू द कस्टमर है, वो सारा कम हो जाएगा। एंड बिकॉज आपका GSTR 1 में 2 दिन में रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड सामने वाले के GSTR 2A में 2 दिन में रिफ्लेक्ट कर रहा है,
तो यू कैन डेफिनेटली आस्क फॉर पेमेंट साइकिल। अब मुझे आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं कि फास्टर पेमेंट साइकिल से क्या क्या बेनिफिट्स है। ओके, आपके बिजनेस में ग्रोथ कितना बेनिफिट्स हो सकता है, तो ये एक मतलब एक अपने आप में ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि ई इनवॉइस पे जल्दी से जल्दी आ सकते हैं। ओके, सो इसमें से डरने की जरूरत नहीं है, बट इससे एम्ब्रेस कीजिए एंड एम्ब्रेस करके इसको यूज कीजिए। ओके, so now we have got two more things. We are already on 445 440, but let us complete those objection handling also. Okay, Q&A हमने during the session भी किया है, but let me take few more do's and don'ts. Okay, first and foremost आपका GST comply properly कीजिए। टैली जिस तरह से बताता है आप उस तरह से आप पूरा स्टार्टिंग से GST comply कीजिए, that is very much important. Okay, after that the numbering of voucher, it should not be empty, blank number नहीं होना चाहिए। ओके, मैक्सिमम 16 कैरेक्टर्स होना चाहिए। अब ये मैं कोई नई चीज नहीं बोल रहा हूँ, जीएसटी जब अप्लाई हुआ था तब ये सारी चीजें हमने देखी थी। ओके, ओनली स्पेशल कैरेक्टर अलाउड इज फॉरवर्ड स्लैश। आई थिंक हैश भी शायद अलाउड है, बट देयर इज नो अदर स्पेशल कैरेक्टर विच इज अलाउड। इट शुड नॉट हैव स्पेसेस, जो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई इनवॉइस नंबर में स्पेस दे दो, तो वो नहीं होना चाहिए। द फर्स्ट कैरेक्टर cannot be zero or forward slash. ओके, ये जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, इस पे मैं हिरल भाई आप कुछ बताना चाहेंगे क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? बिकॉज जो कंप्यूटर लैंग्वेज लिखा है दैट इज टोटली इन अ बाइनरी लैंग्वेज, और जीरो अभी अगर मैं 0 1 2 3 लिखूं या सिर्फ 1 2 3 लिखूं, तो वो केस में कंप्यूटर सिर्फ 1 2 3 ही रीड करेगा, वो जीरो को इग्नोर कर देगा। सो इसीलिए अगर किसी ने अगर 0 1 2 3 करके इनवॉइस रेज कर दिया और 1 2 3 करके रेज कर दिया, टेक्निकली वो अलाउ करना चाहिए, बट वो वहां पे कंप्यूटर उसको दोनों को सेम कंसीडर करेगा और उस वो केस के जगह पे वहां पे डबल इनवॉइसिंग सेम नंबर पे हो जाएगा। यस, सो डुप्लीकेट नहीं होने के लिए आपको जीरो अवॉइड करना है और कंप्यूटर उसका रीड भी नहीं करता है। ओके, सो जीएसटीएन और फर्दर डिटेल्स जो मेलिंग नेम में है वो आपको इंश्योर करना है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 जो भी है मिनिमम 3 to 100 कैरेक्टर्स हैं, तो वो होना चाहिए। ओके, एंड देयर आर मोर डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंट बनाया है हिरल ने और हमारी टीम ने, तो वो अगर किसी को चाहिए तो मेरा ईमेल एड्रेस और फोन नंबर मैं आपको शेयर करूंगा, तो यू कैन जस्ट शेयर दोस डिटेल्स। आपको किसी को भी रिक्वेस्ट है तो पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए, आई विल शेयर अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट ऑन दैट। ओके, अभी कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। स्टार्टिंग में आया था क्वेश्चन सर्विस इनवॉइस पे चाहिए कि नहीं चाहिए। यस, सर्विस इनवॉइस पे भी ई इनवॉइस जनरेट करना है हमको। इफ यू आर अ सीए फर्म और लॉ फर्म जहां पे इसको ओनली सर्विस इनवॉइस जनरेट होता है, यू विल हैव टू एंश्योर दैट यू आर जनरेटिंग एन ई इनवॉइस। एंड टेली प्राइम्स के अंदर क्वांटिटी जो है सर्विस लेजर में हम लोगों को क्वांटिटीज ये ऑटोमेटिकली जीरो करके सेव करेगा और उसको OTH में रिफ्लेक्ट करेगा इन योर GSTR1 UKC में, जहां पे दिखाने का होता है HSN कोड वाइज, तो वहां पे वो इस तरह से दिखाता है। सो बट इन केस यू विश यू कैन ऑल्सो जनरेट अ सर्विस आइटम। ओके, एंड उसका UKC आप रख सकते हैं, इस तरह से आप वर्किंग कर सकते हैं। सो वेदर इट इज अलाउड और नॉट, इट इज अलाउड। Okay, how can I ensure that data entry operators do not upload vouchers for e-invoicing? इसके सिक्योरिटी कंट्रोल मैं ड्यूरिंग द डिस्कशन ये ऑलरेडी कर चुका हूँ कि ये सिक्योरिटी कंट्रोल में आप अपडेट करेंगे तो आपको अपलोड हो जाएगा, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। ओके, व्हेन आई सेल थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, ये जो आपकी एक क्वेरी थी कि ई कॉमर्स पोर्टल में जनरेट कर रहा हूँ थर्ड पार्टी, वो मेरा ई इनवॉइस जनरेट कर रहा है, कैन आई अपडेट इट? यस, यू कैन अपडेट। आपको खाली गेट IRN इन्फो करना है और उस केस में आपको इंश्योर करना है कि आपका इनवॉइस नंबर सेम है। जो ई कॉमर्स पोर्टल ने इनवॉइस नंबर जनरेट किया है, सेम इनवॉइस नंबर आपने भी रखा है, उन्होंने आपके बिहार पर ई इनवॉइस जनरेट कर लिया है, फाइन, बट सेम इनवॉइस नंबर आपने भी रखा है और वो आप गेट IRN इन्फो करेंगे, राइट साइड में एक बटन है, तो आपको सारी डिटेल्स आ जाएगी इंक्लूडिंग QR कोड, एंड आपको अपडेटेड वाउचर्स हो जाएगा आपका। ओके, अच्छा, दो डेटा के बीच में सिंक्रोनाइज हो रहा है, तो वुड दैट बी एप्लीकेबल? यस, द ई इनवॉइस वुड बी जो ई इनवॉइस का डेटा है, IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, QR कोड,
वो दोनों आपके ट्रांजैक्शन जो सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है उसके साथ में कैरी करेगा, एंड आपको कुछ ज्यादा उसमें दूसरा करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सर्वर और क्लाइंट के डिटेल्स में सिंक्रोनाइजेशन सेटिंग्स में टैली ने ये ऑलरेडी एनेबल किया हुआ है। इट इज इनबिल्ट इन द टैली सिस्टम। Finally, you will never go out of the product for e-invoicing. That is the aim of Tally, and it ensures there is a reduction in cost, also not only in getting those APIs clear also, but in maintaining it. Friends, with this, I will come to my ESP once again. That is easy to use, simple to implement, plenty of support. आज इंडिया में जितने यूजर्स टैली के हैं उतने और कोई सॉफ्टवेयर के नहीं हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ टैली इज, एंड एट द सेम टाइम टैली का हेल्पलाइन नंबर भी बहुत फ्रीली अवेलेबल है, दैट यू कैन एक्सेस इट, help.tallysolutions.com। आई थिंक संजय शेयर कर लेंगे उसके लीड्स अपडेट करने का, ये कैसे कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। फ्रेंड्स, मेरे कुछ केस स्टडीज हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे। दिस वाज फॉर द जॉब वर्कर, गोल्ड वाला इनवॉइस था, सो दे वर आल्सो एबल टू गेट इट। उन लोग जो गोल्ड इशूइंग जॉब वर्कर से कर रहे थे और रिसीव कर रहे थे, तो उस केस में दे वर एबल टू ट्रैक इट एंड गेट करेक्ट इंफॉर्मेशन ई इनवॉइस का, दे वर एबल टू गेट इट। एट द सेम टाइम द अदर कस्टमर वाज इन केमिकल मैन्युफैक्चरर, ओके, वो एक दिन भी उसका काम रुका नहीं है, थैंक्स टू टैली। ओके, they were able to update all their e-invoice immediately as and when the invoice generate हुआ उसके साथ में। ओके, टैली का एक बहुत अच्छा फीचर है, अभी जैसे मैंने बताया था HSN कोड और GSTN वेरीफाई करने का, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग भी आप कर सकते हैं, और जब ई इनवॉइसिंग करते हैं तो आपको सामने वाले का GSTN नंबर वैलिडेट है कि नहीं है वो मिल जाता है। तो ये कार डीलर के केस में बहुत यूजफुल रहा था उसको अपडेट करने के लिए। ओके, सो एट द सेम टाइम एक मेटल मार्केट डीलर था, डीलर है रादर, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि ITC बराबर है कि नहीं है। सो ही वेरीफाइड द परचेजेस GSTN नंबर ऑफ ऑल हिज vendors and ensured that all of them whosoever e-invoice applicable है 50 crores plus, अभी जैसे 20 crores आया नहीं है from 1st April, and he ensured that he is getting that ITC compliant invoice immediately. Okay, then only he made the payment, and this was the last case study of a dry fruit and a chemical manufacturer. तो उनके multiple dispatches हो रहे थे, and while Tally के अंदर से, this is a live case study that we saw, they were able to ensure that not a single day that business stopped. Okay, so this is all thanks to Tally's platform, for which I'm recommending you all to become a consultant, and uske liye aapka details hai. Friends, these are my credentials. You can connect back to me on my mobile number or on my email address. I will be very happy to share the detailed document of FAQ, those who require it. एंड अदरवाइज वो टैली के हेल्प पोर्टल पे और NIC के हेल्प पोर्टल पे भी अवेलेबल है, यू कैन गेट इट देयर एज वेल। ओके, आई थिंक देयर वर सम क्वेश्चन, आई लेट मी सी, आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आर आंसर्ड। संजय भाई, We have already taken up most of the questions. I'm just still checking कि कुछ pending रह गया है। Okay, and if somebody wants to further unmute themselves, अतुल जी या बाकी के कोई भी participants किसी को unmute करना है तो please happy to share your inputs, listen your troubles in case you require. Mithilesh ji, you want to talk? CA Mithilesh Murarka. हेलो, Yes. सर मेरा ये कहना है, ई इनवॉइस के केस में जब डेट और स्टाम्प दोनों आ रहे हैं, तो जब GSTN पोर्टल पर जो एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां फिर प्रॉब्लम आ सकती है कि आपने बाद में इनवॉइस जनरेट किया है सेम डे नहीं करके। हाँ मिथिलेश भाई, गवर्नमेंट कौन से डेटा को कैसे यूज करेगा ये ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है।
अगर वो डेट और टाइम, एक्नॉलेजमेंट डेट और टाइम तो स्टैंप आता ही है उस पे कि आपने कौन से दिन पे जनरेट किया है। सो कल उठ के ये क्वेश्चन तो आ सकता है कि आपने 3 दिन के बाद में क्यों किया, 7 दिन के बाद में क्यों किया, और आपने पहले नहीं किया, क्योंकि उनके पास सारा डिटेल्स अवेलेबल है। आपकी हर एक गतिविधि का क्या बोलते हैं वो कंट्रोल रख रहे हैं वो। सो आपको वो ध्यान में रख के ही बिजनेस सिनेरियोज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। Hello. Yes, sir. Sir, good evening, sir. Sir, for one of my clients, they are already doing e-invoice through. साथ में आ जाएगा कि इवनिंग में मैंने सारा इनवॉइस जनरेट किया है। हाँ, तो उस केस में तो गवर्नमेंट बोल सकती है कि आपने पूरे दिन से यस 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 सी आपके बिजनेस सिनेरियोज अगर आपको परफेक्टली वैलिड लग रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट किसी ने मेरे को बीच में सेशन के पूछा था कि भाई मैं सारे इनवॉइसेस जनरेट कर दूं और मंथ एंड में सब साथ में करूं, तो व्हाइल इट इज टेक्निकली पॉसिबल, इट इज अ रिस्की सिनेरियो। ओके, तो कुछ चीजें होती है टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं होती तो अलग बात होती है। व्हाट हियर आस्क्ड और व्हाट यू आर आस्किंग इज टेक्निकली पॉसिबल। आप और ये कम रिस्की है कि आप दिन में एक साथ में सब चेक करके फिर इनवॉइस जनरेट कर दो, दैट इज ऑल्सो वैलिड। बट अगर आप 7 दिन 10 दिन बाद में कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट भी क्वेश्चन करेगा या कभी जब उस चीज के ऊपर आएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। Yes, sir. Yeah. Sir, for one of my clients, they have raised e-invoice in November. It is reflecting in GSTR1 e-invoice summary, but not in GSTR1 portal. So how to solve this problem, sir? E-invoice raised, but it is not reflected in GSTR1. So, my friend, the e-invoice is supposed to be maintained like in a T+2 system. Okay, आपके जिस दिन आपने अपलोड किया है उसके 2 दिन बाद में अभी आपको अलाउ कर रहा है, लेट मी कंप्लीट, आपको वो 1 महीने पहले का भी अलाउ कर रहा है। अब 1 महीने पहले तो आपने GSTR1 फाइल कर दिया होगा। ओके, सो द चैलेंज इज दैट वी शुड नॉट फाइल द अर्लियर मंथ्स इनवॉइस। ई इनवॉइस का जो है अगर लीगली रिक्वायर्ड तो है, बिकॉज देन in GSTR1 portal it would be reflected as per document date. Okay, वो document date change नहीं करेगा, आपको कभी reflect करेगा वो after the T+2 date, but आपके उस document date के हिसाब से reflect करेगा। So that is what is important. Okay, तो उसके हिसाब से देखिए, and being a new system there might be some queries, so वो हम लोग GSTN portal में फोन करके उनको मेल करके we can get that clarification कि क्यों reflect नहीं कर रहा है। Okay, this is for the November month, sir. Yeah, you can ask them कि why it is not getting reflected. Okay, thank you. Thank you very much. Yeah. There are few more hand raised. Yes, yes, sir. Bharatji, you have query? Nilesh Patel. Hello. Hello. Yes. Yes. Am I audible? Yes, Yeah, sir. very much. Yeah, sir, I have a query. While you said that debit note and credit note needs to be e-invoice needs to be generated for debit note, credit note. So while issuing debit note, suppose there is a difference, change in rate of product. So we will issue debit note. So how do we generate that debit note in Tally? Additional sales invoice. Yeah. Rate difference. For rate difference, we are issuing a debit note. So how do we generate that debit note in Tally? Accounting voucher invoice is allowed, na? Accounting voucher invoice is allowed, and you need not provide the quantitative information. आप item select कर सकते हैं. Item में quantity information मत दीजिए. Directly जो value आता है rate difference का, वो value provide कीजिए, and based on that your e-invoice would be generated. Okay. Yes. So like I prepare sales invoice, in that same manner I have to prepare debit note also, right? Yes. You can create a separate series for debit note. That is not a problem. Okay. Sales invoice में debit note separate series provide कर सकते हैं. Okay. Thank you. Yes. हेलो. Yes, sir. Yes. हेलो. Yes, sir. सर सुनाई देता है सर? हाँ जी, बोलिए. हेलो. Yeah, please go ahead. हेलो. जी सर, बोलिए. सर हमने TCS डाल रहे हैं इनवॉइस पर,
वो 50 lakhs हो गया कस्टमर का, हम TCS इनवॉइस पे डाल रहे हैं, वो भी ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा? हाँ, TCS का भी इंफॉर्मेशन आपको अदर चार्जेस में एप्लीकेबल करना पड़ेगा। एंड अभी ये लास्ट वीक में FAQ आया है, उसमें उन्होंने ई इनवॉइस पोर्टल पे अलाउ किया है। पहले नहीं अलाउ कर रहे थे, बट अभी मेरे ख्याल से मैंने FAQ जितना पढ़ा है उसमें TCS का भी इंफॉर्मेशन अगर आपके इनवॉइस में है तो वो अलाउ कर रहे हैं कैप्चर करने का, पहले नहीं कर रहे थे। वो सर GST 1 पोर्टल में नहीं दिख रहा है सर वो ऑप्शन, इसलिए डाउट आया। हाँ, वो अभी एक बार डबल चेक करना पड़ेगा, बट ये 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ही एक FAQ आया है, उसमें दे हैव अलाउड इट। ठीक है सर, ओके। ऑलराइट, यस। चैट में कोई इंफॉर्मेशन और? इज देयर एनी एग्जेम्पशन फॉर SEZ यूनिट फॉर ई-इनवॉइसिंग? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, so there is one more hand raised by Mr. Bharat Vora. Bharat जी, आपका कुछ क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं। No sir, thank you. All right, perfect. So whether e-invoice will be raised for high seas sales? No, high seas sales को applicable नहीं ना, exempted goods है। Correct. Okay, there's one more question. In Tally auditor version, can we generate e-invoice? Of course. There is Okay. no limitation. Auditor edition है कि नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। That's correct. Auditor edition is just another flavor of the Tally license. उसका Tally software के ऊपर ज़्यादा कुछ implication नहीं होता है। Yes. For multiple GSTIN. Yes. Okay, so in Tally auditor version, can we generate e-invoice for multiple GSTINs? उसमें आपको एक सेपरेट कंपनी रखना पड़ेगा। ओके, मतलब जैसे आपका अहमदाबाद गुजरात का GSTN सेपरेट है, आपका महाराष्ट्र का सेपरेट है। सो अगर आप सेपरेट कंपनीज रखते हैं तो यस, यू कैन जनरेट इट फॉर मल्टी कंपनी GSTNs ऑल्सो। ओके, so that is what it is, and we are expecting a update in Tally, Sanjay bhai, so that will help in keeping multi GSTNs in one single company. But as such, अगर आपका multiple companies हैं तो आप you can create Tally में separate companies रखिए, and उन सबका e-invoice आप एक ही Tally में से generate कर सकते हैं, not required to purchase another licenses again and again. Perfect. Thank you, Dilip ji. I hope we were able to answer all the questions. जी. हेलो। जी सर, आपका और क्वेरी है? Yep. जी बोलिए। सर आपने QR कोड वो भी B2B इनवॉइस पे डालने पड़ेगा बोले ना सर? जी, वो कंपलसरी है। QR कोड हमने बनाना पड़ेगा और टैली वाला बना के देगा हमको? टैली वाला बना के नहीं देगा, टैली वाला जनरेट करेगा ऑन द फ्रॉम द ई-इनवॉइस पोर्टल। ओके। हाँ सर, बना नहीं सकते, you will have to generate it and then you will have to get it. वो आ जाएगा आपका B2B पोर्टल पे ऑटोमेटिकली आएगा। नॉर्मली कैसे सेल्स? यस सर, प्लीज गो अहेड। हेलो, आपको दूसरे कोई पोर्टल के लिए आपको QR कोड जनरेट करना है, पेस्ट करना है, वो सब करना था, बट टैली में ऐसा कुछ नहीं करना है, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करके आ जाएगा। ठीक है सर। या हेलो। यस। हाँ जी, मैं क्या था सर, ये जो हाई सी सेल है इस केस में नहीं बनेगा क्या ई-इनवॉइस? इसमें मतलब सेल्स एक्सपोर्ट तो होती है ना वो भी? नहीं, इन माय व्यू एग्जेम्प्टेड गुड्स पे नहीं आएगा। हाई सी सेल्स में GST नहीं एप्लीकेबल है, तो वो जहाँ पे नहीं है वहाँ एग्जेम्प्टेड क्या टाइप ऑफ बिजनेस है वहाँ पे नहीं होगा। नहीं, लेकिन उसे हम अपना सेल्स का इनवॉइस में तो रेस करेंगे ना बुक्स में, जैसे सेल्स जो एक्सपोर्ट का अंडर कैटेगरी में आता है ना हाई सी सेल। तो हाँ, आप B2C में आप रेस कर सकते हैं ना। B2C में जाएगा वो? सॉरी, B2C के जैसे आपका हाई सी सेल्स जो मेरे को ध्यान में है ना, वट एवर नॉलेज आया है इट, और मैंने एक कंसल्टेंट से पूछा भी था मेरे सीनियर इसमें कि वेदर हाई सी सेल्स वुड रिक्वायर एन ई-इनवॉइसिंग, सो आई हैव गॉट अ कैटेगरिकल रिस्पांस कि नहीं, उस पे ई-इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। That is what my understanding is. Maybe you can get it double check from your consultant, but that is what my understanding is.
तो उसमें जैसे कि यदि कोई हाई सी सेल हो रही है, उसका जो परचेस हमने करा, तो उसको हम उस पे रिफंड नहीं ले सकते क्या जीएसटी का? फिर जीएसटी का रिफंड तो लेते हैं ना उस केस में भी हम? जीएसटी का रिफंड एक अलग चैप्टर है और ई इनवॉइसिंग इज अलग चैप्टर। वो ओके, आपका मतलब अलग है, दोनों चीजें अलग है ना सर। हाँ जी, हाँ जी, मतलब उसमें कुल मिला के इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगी, आप कह रहे हैं? हाँ, ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है फॉर हाई सी सेल्स। दैट इज अ कैटेगरिकल क्वेश्चन दैट आई हैड आस्क्ड इट, मेरी भी क्वेरी थी, तो उस केस में आई गॉट अ रिस्पांस कि उसके में एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, और भी कोई ऐसी एक्सपोर्ट होती है जिसमें इनवॉइस एप्लीकेबल ना हो अदर देन हाई सी सेल? मैंने B2C तो बताया है, एग्जेम्प्टेड गुड्स है जिनका एप्लीकेबिलिटी नहीं है। हाँ, एग्जेम्प्टेड गुड्स ठीक है, लेकिन जैसे नॉर्मल एक्सपोर्ट गुड्स है उस केस में तो बनेगा ना इनवॉइस? हाँ, एक्सपोर्टर्स को दे रहे हैं B2 जो भी है उसमें तो बनेगा। ठीक है, यस, ठीक है, ओके, थैंक यू। और भी कुछ पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज किया है। एक क्वेश्चन है कि अगर एक क्वेश्चन है that we have 3 GSTN in our company, how many IRP portals we have to maintain, like one IRP for one GSTIN or common IRN or IRP for all my branches is possible? आई डिडंट गेट इट, संजय भाई एक बार फिर से बोलेंगे? So multiple GSTN है, okay. So is it like one IRP for IRP तो एक ही है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, IRP थोड़ी अलग है, ये जो GSP है वो चेंज होता है। ओके ओके, सो GSP आप मल्टीपल GSP रख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि टैली ही रखना है, बट अगर आपको टैली के अंदर से जनरेट करना है ई इनवॉइस तो आपको टैली इंडिया सारी कंपनीज में रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। सो अगर if they have 3 companies, so they'll have to do the registration for all the 3 companies, right? Yes, जो अलग GSTN का अलग रजिस्ट्रेशन। Correct. हाँ, वैसा। All right. ठीक है। So I see that there was one question that what is the approximately fees to be charged for as e-invoice consultant? पैसे की बात आई, आप बताइए। जैसा सूट रहेगा वैसे चार्ज करेंगे, जैसी फिटिंग। नहीं ऐसा नहीं है। सी क्वेश्चन इसमें खाली ई इनवॉइस का नहीं है। अगर आप खाली ई इनवॉइस के बेसिस पे देखेंगे तो आपको ज्यादा शायद चार्जेस न मिले, क्योंकि टैली ने बहुत सिंपल बनाया है, बहुत स्विफ्ट बनाया है, बट यू हैव टू लुक इट फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव कि उस बिजनेस को क्या रिक्वायरमेंट है। मैंने जो स्टार्टिंग में आपको एक वीडियो दिखाया था, क्वेश्चन पूछिए, नॉट बिकॉज ऑफ ई इनवॉइस बट अदरवाइज भी बिजनेस में क्या उसको ऑर्डर प्रोसेसिंग चाहिए, क्या उसको जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी चाहिए, क्या उसको टीडीएस चाहिए, क्या उसको पेरोल चाहिए। लुक एट दैट, उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट देखिए और वहां पे देखिए कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है अलोंग विद ई इनवॉइस। ओके, ई इनवॉइस को यूज कर सकते हैं आप एक अच्छे हुक के लिए, क्योंकि आज उसकी जरूरत है, आज वो आपके पास आया है या आप उसको बात कर रहे हैं तो आपकी बात सुन रहा है। बट लुक एट इट फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव कि क्या मैं उसको अकाउंटिंग मैनुअल बना के दे सकता हूँ क्या। अब मैं उसको अकाउंटिंग मैनुअल बना के दे रहा हूं तो मैं 30-40 हजार भी चार्ज करूंगा तो मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि मैं उसको उसकी सिस्टम के हिसाब से, उसकी अकाउंटिंग के हिसाब से बना के दे रहा हूं। और इस तरह से मैं स्टैट्यूटरी की बात करूं, जीएसटी की रिटर्न्स की बात करूं, तो ये अलग अलग चीजों में अलग अलग अपडेट होता है। सो इट इज नॉट जस्ट ई इनवॉइस अपडेट। ई इनवॉइस अपडेट अगर आप देखेंगे कि हुक है, वो आप एक नॉमिनल फीस चार्ज कर सकते हैं, मे बी 4,000 to 5,000 रुपीज पर कंपनी और मे बी वॉट एवर इट इज, but not all, don't look at it from that small perspective. Have a grand vision, have a bigger vision and see what you can do more with that client. आप उस client को क्या और help कर सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन है, on behalf of invoice generated by third party, how can we generate e-invoice? नहीं, हम लोग को थर्ड पार्टी के लिए ई इनवॉइस जनरेट करना है। स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन मिस्टर वेंकट, के क्योंकि टैली में जो जनरेट होता है वो अपने लिए होता है या अपने बिहाफ पर किसी और ने किया है तो उसका गेट डेटा कर सकते हैं, बट हम खुद थर्ड पार्टी के लिए करें तो उसका डिटेल्स हम लोगों को लगेगा, उसका यूजर आईडी और अपडेट। आई एम नॉट टू श्योर वेदर दिस सिस्टम इज अवेलेबल इन देयर और नॉट। You may connect back to me once again on my email address or phone number.
I will definitely try and find an answer to it. How Tally can be useful for that scenario also. Okay, but as such, अगर कोई third party ने हमारा e-invoice generate किया हमारे behalf पर, तो वो हम get data करके IRN करके वो कर सकते हैं, वेंकट. Right, sir. So I think we have covered up the entire thing. मिथिलेश जी, आपका कोई query है? यस सर. जी सर मेरा ये कहना है, जैसे मैं एज ए ऑडिटर हूँ, मैं कई सारे कंपनियों का बुक्स राइट करता हूँ, तो मैं जैसे टैली प्राइम सिंगल यूजर भी मल्टी यूजर भी यूज कर रहा हूँ, तो प्रत्येक कंपनी के लिए अलग अलग टैली की तो जरूरत नहीं, एक ही टैली में काम हो सकता है. एब्सोल्युटली. और उसके बाद एक क्वेश्चन है कि जैसे मेरे 20 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर है जिनके, तो उनके सिर्फ B2B टैक्सेबल में इनवॉइस जनरेट होगा या एग्जेम्प्टेड वाला और B2C में भी जनरेट होगा? नहीं, B2C में नहीं जनरेट करना है, B2 और एग्जेम्प्टेड गुड्स में भी नहीं करना है, खाली B2B इनवॉइसेस में ही करना है. B2B टैक्सेबल में ही सिर्फ इन्वेस्ट ये जनरेट करेंगे. यस मिथिलेश भाई. सर एक और क्वेश्चन था सर, जैसे मेरा ये टैली प्राइम जो है, मेरे एक सिस्टम में टैली ERP 9 तो चल रहा था, लेकिन टैली प्राइम उसमें वो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, वो 64 बिट 32 बिट वाला वो विंडो का प्रॉब्लम कर रहा है, ये क्या वजह से हो सकता है? हाँ, उस पे संजय भाई ज्यादा बोलेंगे. सो आपका अगर सिस्टम 34 बिट का है, 32 सॉरी, अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो ही आप टैली प्राइम उस पे इंस्टॉल कर पाएंगे. अच्छा अच्छा जी, सिस्टम 64 बिट का होना मतलब प्रोसेसर जो है वो आपका 64 बिट का होना. तो आप आपके स्टार्ट बटन में जाके वहाँ पे, या तो आप सर्च जो ऑप्शन होता है उसमें चेक कर लीजिए सिस्टम टाइप करके कि आपका सिस्टम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसका प्रोसेसर. नहीं, मेरे पास एक सिस्टम जो मेरा सर्वर है विंडोज 7 प्रोफेशनल 32 बिट का है, तो उस पर ये टैली प्राइम नहीं चल पा रहा है. हाँ, उस पर नहीं चलेगा. बराबर है संजय भाई ने जो बोला मिथिलेश भाई कि टैली वर्जन्स जैसे जैसे अपडेट कर रहा है, वैसे वैसे बहुत सारी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट और अपलोड कर रहे हैं. तो वन ऑफ द थिंग्स दैट हैज मेड इट कंपलसरी कि अभी टैली प्राइम अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपका जो सिस्टम है, बेस सिस्टम है, वो 64 बिट होना जरूरी है. तो वो आप आपकी मशीनरी अपडेट कीजिए, कोई कॉस्ट ज्यादा नहीं है, तो वो आप अपडेट करेंगे तो यू विल बी एबल टू अपलोड अपडेट टैली प्राइम एज वेल. ये जो टैली प्राइम और टैली ERP 9 दोनों एक ही साथ सिस्टम में चल सकते हैं क्या, किसी भी सिस्टम में? जी बिल्कुल चल सकते हैं. ओके सर, थैंक यू सर. राइट, तो हमने लगभग सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए. अभी क्वेश्चन Q&A में भी नहीं है, चैट में भी नहीं है और हैंड रेज्ड भी नहीं है. सो आई थिंक वी आर गुड टू गो. वी हैव टेकन ऑलमोस्ट more than 2 hours, and thanks to Punit sir and his team member Mr. Hiral. Yeah, Hiral ji, and thank you so much for all the participants for asking questions and making it interactive. Because of you, this session has got excited and brought the excitement to all the others, and they also started asking questions. एक क्वेश्चन विपुल भाई का पेंडिंग है, अभी उन्होंने हैंड रेज किया है. Yes, both party are GST registered, but goods is exempted. Is e-invoice required? No. Exemption के लिए हम लोग कह रहे हैं ना कि exempted अगर है, अगर product, so it is e-invoice is not required. So as I get it from my, मैं जिनसे GST का काफी डिस्कशन करता हूँ, मेरे कंसल्ट जो सीनियर हैं, तो the e-invoice exemption is not qua business, it is qua line of activity. So अगर आपका exempt goods है तो आपको e-invoice नहीं है. Okay, अगर it doesn't matter that आप GST registered हो के नहीं है. That is what my understanding is, Vipul bhai. Perfect. So I think we have come to the end of our session, and we sincerely thank each and every participant, and with a lot of thank you from Tally Solutions to CA Punit Mehta and Hiral ji for imparting the time and knowledge to all the participants, and enlightening us with the knowledge on e-invoicing. I'm sure जो भी knowledge आपने आज gather किया है, आपको आने वाले टाइम में जब e-invoice implement हो जाएगा from 1st April onwards, आपके बहुत काम आएगा. And keep looking on this particular space, जो CA Connect वाला जो space है, जहाँ पे हम every Wednesday ऐसे ही on board होकर के आपको knowledge share करते रहते हैं.
So there will be a few more sessions which are lined up and very interesting ones. And please keep connecting and getting updated. So with that, thank you so much. Thank you, Punit bhai. Pleasure of all of you. And जैसे मैंने participants को promise किया था और participants ने भी मेरे को बहुत अच्छे से response किया. Thank you. And till last moment अभी भी 50 लोग हैं after 2 hours of my listening and Hiral bhai के सुनने के बाद में. And thank you Sanjay bhai for effectively coordinating this entire event. And Darshan also if he is here. Ranjit ji, Chinaman ji, and all the participants who are here till now. It has been one wonderful learning session. And I've really enjoyed it, and keep looking at this particular CA Connect space, because we keep on coming up with some kind of beautiful sessions. Last week, my friend Anand took it on a service invoice, how to use Tally for a service industry. Okay, most likely in the next week, we will have some other session which is very useful and effective. So, ये जो sessions हैं, ये absolutely free of cost है. It is coming from Tally's platform. So इधर आपको कोई भी मतलब जो भी information मिलेगी authentic information मिलेगी, and इसमें आपको बहुत helpful रहेगा आपके businesses के लिए. And I hope with today's session, some of you or all of you would become an ATS. That is not anti-terrorist squad, but accounting, technology, and statutory consultant. Absolutely. So wish you all the very best. And thank you so much, and stay safe wherever you are, and we'll keep on connecting. And next week we have a wonderful session on exploring the unexplored features of TallyPrime. So do join us for that as well. With that, thank you so much, and have a wonderful evening ahead.